So, hello Ansuman sir, how are you? I am fine, sir. Okay, so let's begin our journey to these practice papers. So we are solving some questions. कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी और उसमें शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरह से एग्जाम्स में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना होता है वो हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस सब लोग को आते हैं, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन करना जानते हैं। एग्जाम्स में स्कोरिंग करना काफी डिफिकल्ट सबके लिए होता है। सो सी दिस क्वेश्चंस लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, हम लोग मेनली मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। ये पहले क्वेश्चन भी आते हैं, ये डेफिनेट पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न तो बहुत प्रैक्टिस से आता है, काफी प्रैक्टिस करेंगे तो पैटर्न मालूम पड़ता है क्या। जैसे हमने इस पर बात की थी कि यहाँ पर क्या 20 है, 32 है, 47 है, 57 है एंड 74 है। So what will come in the place of question mark in the following number? So these are definite patterns. Say 20, 32. So last time we had seen how 20 difference of 12. Then how much? 17, right? Then how much? 10. Then how much? How much? सात 17 17 Okay. So 12, 17. This is 15 here. 15 here. Here it is 5. No problem. So let's remove that. Here it is 15. 15, right? Okay. So now this pattern will not become easy by this time. Again, we have to see some pattern in this. So 12 and 15. So what is the difference? Plus 3. We are adding plus 3. Then 15 to 10, what is? -5 Subtracting minus 5. Then 10 to 17, what is the difference? +7. Plus 7. So what is the point here? Either adding plus. So in this, right now the patterns, the operations are going on not on this given numbers, but they are happening on this the operations are happening on this difference only. So plus 3 minus 5. So they are the prime numbers. The hint is that 3, 5, 7 are prime numbers. So here you should think 9 should come. What you will think generally? That minus 9 will come. Generally you should think like that, because the pattern was like odd numbers, 3, 5, 7, 9. So pattern was odd numbers. But if you minus 9 if you do, and here if you do this minus 9, suppose that I am just doing for explanation. See, रटना नहीं मारना, रट्टा मारेंगे तो समस्या हो जाएगी. So here if you do, then 12 plus 3, 15, 15 minus 5, 10, 10 plus 7, 17, 17 minus 9, what will come? Tell me. It should come 8. 17 plus 9 8. 8. Okay. But 8, if you add in this, 8 for 12. So 82. 82 is not in the answer. 82 is not there in the answer. 82 is not there in the answer. That's why we should change the strategy. See, रट्टा नहीं मारने का, अंडरस्टैंडिंग है. हमने पहले ऑड पैटर्न देखा, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर देखा, रट्टा नहीं मारने का. तो ये हो गया. तो यहाँ ऑप्शन में कहीं पर है नहीं 82, तो हमने बदला अपना स्ट्रेटजी कि ठीक है, ये 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर भी है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है. तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 11 है, 9 नहीं है. तो अगला हमारा जो प्राइम नंबर है वो 11 है. अगर हम 11 रखते हैं यहां पर माइनस का, तो ये इधर से प्राइम नंबर हो गया. और इसमें जो ऑपरेशन करना है, इसमें अगर उसमें ऐड करेंगे 17 में माइनस तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 6 plus 6 +6. ओके.
So this, no, 6. So 6 we have to add in what? Here 74, because the operations are going on in the main series. 80, 80, So 80. when we add the, then it will come how much? 80. 80. So 80 is there in our answer. Our whatever we have below the options, 80 is there. So we are not wrong also. 3, 5, 7, 11, they are the prime numbers, and answer also is matching 80. So in that way we can mark the answer correct like that. Okay. So my point was, मेरा मतलब ये है कि इस तरह के पैटर्न बहुत सारे आएंगे, कभी ऑड नंबर में भी लग जाएगा। नहीं, यहाँ पर 3, 5, 7, 9 होना चाहिए था अगर हम ऑड नंबर का पैटर्न देखते तो, लेकिन वो नहीं है, इसलिए हमको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। राइट, क्लियर? Yes. सेकंड, सी द थर्ड क्वेश्चन नंबर 32, 40, 53, 76 and 172. So tell me, 32 means what? Difference is how much? 8. 8. Then difference how much? 13. 13. Then how much? Again 13. Pakka? Kit 23. 23. Yes. 23. Then here we don't know, and here we don't know. Okay. So it is 8, 13, 23. So pattern, see, pattern will come on the third, like not on this. We have to see the pattern on the operations, what are happening in these also. Whatever we are adding here, 8, 13, 23. So what is the relation between 8, 13 and 23 also? So let's 5. So इसमें here 5 का गैप है, 6 का गैप है। +5 यहाँ किया गया है, फिर कितना? 10 +10. सो अगला जो होना चाहिए, जो भी नंबर जो भी यहाँ पर आएगा, अगला जो होना चाहिए 15 का वो होना चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए? 15 का। तो अगर हम 23 और 15 ऐड, हाँ, तो कितना आएगा बताइए, ऐड करेंगे? 76 और 53 ऐड करें, नहीं 15 नहीं ऐड नहीं नहीं, करेंगे। ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, पहले ये ऐड करेंगे कितना है? 23 एंड 15, 5 3 8 और 2 1 3, 38। 38। अब 38 को यहाँ ऐड करेंगे, इसमें कितना आएगा? 76 8 14 और 7 3 10, 11, 114। 114 is the right answer. So again we can see, don't immediately answer that is answer. We can always cross check. 114 is there, we can always cross check. See, if you want to get the good marks, then you have to understand, we have to become very proactive. 114 तो आ गया है, अब जरा इसमें एक बार देख तो लें कि जो अगला वाला है वो उसमें मैच करा नहीं कर रहा है, इन दोनों में। 172 114 माइनस करेंगे तो ऐसे नहीं, 12 में नहीं, वो नहीं, यहाँ पर, यहाँ देखिए पैटर्न। अब अगर यहाँ 5 10 13 यहाँ पर कितना करें, कितना यहाँ पर 114 70 से माइनस करेंगे तो 4 6 नहीं, तो वहां 8। नहीं, इसमें 38 में हम क्या ऐड करें? पैटर्न, भैया पैटर्न देखो भाई, 38 में क्या ऐड करें? तो 20 ऐड करना पड़ेगा। समझो भाई, बात समझो। पैटर्न हाँ यहाँ पर है, कितना कितना करें? 38 58 और 76 और ऐड हो जाएगा। 58 यहाँ जाएगा, 58 यहाँ जाएगा तो कितना आएगा? 1 1 8 4 12 71 72 is right. So we are getting it now. 172. It means our answer is correct. Yes, even our pattern is whatever we have assumed is correct. So we have to always cross check. We should cross check. Otherwise, you will surely lose marks. Okay? Okay, sir. Very Thank good. you. So now let's move to the mathematics question. These patterns we will do again, but let's go for 37 question number, because we want to tough. They are simple questions. Scoring 31, 32. They are in questions are good, but if you have practice, you can solve very easily. Not so difficult question, but we should know all these things. But 37, these are the mathematics question. They are very lengthy question. And if you start solving, अगर आपने
लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया तो पूरा 2 घंटा आपका एक क्वेश्चन लगाने में ही चला जाएगा। तो फिर कहां से आप होगा सिलेक्शन? हाउ यू गेट सिलेक्टेड, टेल मी। तो लेंदी क्वेश्चन आप पहले पहले इजी क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद लेंदी क्वेश्चन लगाएंगे तब फायदा रहेगा। तो हाँ, लेंदी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका पेपर भी छूट सकता है। ये इसीलिए, लेकिन ये अकल वहां नहीं आती ना। हमको दिखाना है कि हमको सब आता है, हम 100% पेपर सॉल्व करके आएंगे। यस, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। A shopkeeper marked up the price of article P by 20% and give discount of 10 D%. Then he gets a loss of D minus 111%. And if the cost price of article Q is a rate 200 and gets a profit of 1.5 D%, then find the selling price of the article Q. So there are two questions parallelly. First question is still here and second question is here. Both questions are separate. Both are separate questions. Only thing is that here 1.5D, so D we have to calculate from the first question and use in the second question. Very simple. So let's solve the first question first. Shopkeeper, article P, 20% mark price. So if let's assume CP, cost price of article P. What is the cost price? Suppose that it is P value, मान लीजिए P है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। तो मार्क प्राइस क्या बोल रहे हैं वो? 20% में मार्क प्राइस किया है, मतलब जो आपने छापा है आपके आर्टिकल पी में, वो रेट का 20%, 20% उसमें ऐड किया है अपना पैसा, अपना मुनाफा, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज द मार्क प्राइस, एमआरपी कितना है बताइए? 20p upon 20p by 100 plus P. यस, सो दैट मीन्स 120 p per 100, right? 100. Clear? This is the shortest and fastest thing I am telling. Don't write everything, otherwise you will fill the whole copy only. So this is the MRP of article P. Okay. Now give discount of D%. अब जब सेलिंग करता है वो, सेलिंग करने में क्या है? नाउ सेलिंग स्टार्ट्स, क्या है? सेलिंग करता है वो, क्या करता है? सेलिंग करने में क्या होगा? सेलिंग करने में क्या होगा? वो डी डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने में उसको लॉस हो रहा है। डिस्काउंट ऐसा दिया तो डिस्काउंट में जब लॉस होता है तो क्या होता है? सीपी इज मोर देन एसपी, राइट? डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या आपका? डिस्काउंट सेलिंग प्राइस एसपी कितना है बताइए? एसपी कितना है डिस्काउंट देने के बाद? डिस्काउंट किस पे एसपी जो है, डिस्काउंट देंगे किस पे? डिस्काउंट आप शॉपकीपर है, डिस्काउंट देते किस पर है? एसपी एसपी में देंगे, एसपी में। एमआरपी में देखना, जो एमआरपी होता है, डिस्काउंट किस? सॉरी, एमआरपी में हाँ, तो एमआरपी कितना आपका? 120 120p पी। अपॉन 100। अब इस पर डिस्काउंट देंगे आप तो 1 माइनस D%। क्लियर? या ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। फाइन, नाउ सेलिंग प्राइस तो आ गया। अब सेलिंग प्राइस के बाद लॉस हो गया उसको, तो सीपी आपको पता है, एसपी पता है आपको आर्टिकल पी का, और लॉस में क्या होता है? टेल मी। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। या सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। 100 ये अगर परसेंट इंटू ले इनटू, इंटू 100। फाइन। सो हुआ इनको है डी माइनस 11 अपॉन 100, ये हुआ इनको परसेंट लॉस। और हमारा सीपी कितना है? तो इसको जरा ब्रेक कर लें, तो 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी। एसपी हमारा है 120p, 1 माइनस डी अपॉन 100 अपॉन सीपी कितना है? पी। ये कट जाएगा, ये हो गया हमारा ये। क्लियर? सो लेट्स मोस्ट सॉल्व इट। तो
1 minus 120 plus 120d upon 100. Fine. Clear? Any doubt here? Yes. No. Okay, fine. So here if you can simplify that, because you can get to simplify, otherwise it will become difficult. 100 minus d, 100d, this, okay, fine. So this should be simplified. So this how much comes here? Minus 119 plus 120d upon 100. Fine. 120d upon 100 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. नहीं, ट्रांसफर नहीं करेंगे, थोड़ा लेट्स डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. एसपी है अपॉन सीपी है. एसपी में 100 यहाँ पर था, तो मैं 100 कहाँ गया? एसपी पर 100 है ना यहाँ पर. एसपी में यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ये 100 ये था ना, ये 100 ये. यस यस यस. तो ये 100 इसको क्योंकि हमको बहुत साफ निपटाना बहुत अच्छी तरह से, तो ये 11 अपॉन 100 और इसको हम ऊपर ले लें. ठीक है, ये पी कट जाएगा, तो 100 माइनस 120, ओके, एंड देन d upon 100 प्लस 120d अपॉन 100, दिस मच. 100 कैंसिल हो गया. ये वाला 100 लेफ्ट हैंड साइड वाला 100 तो उस नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे में रहेगा. ठीक है, पूरे में 100 रहेगा, ये ऐसे. हाँ, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? 100 माइनस 120, 100 माइनस 120. 120 के पास जो है 120d/100 रहेगा, लेकिन एक 100 नीचे भी होगा. हाँ, यस, यहाँ पे रहेगा ये. फाइन. सो दिस विल गेट कैंसिल. So d minus 11 is equal to minus 20 plus 120d upon 100. इधर लेके आएंगे इसको. d is equal to minus 9 और इधर इसको पूरा ले आते हैं. ठीक है, प्लस 120d upon. So only calculation is there. Main thing 9 is equal to, it will come, so 20d upon 100. So d comes out to be 900 upon 20, 45. This is not the answer. D we have got it now. Now come to the second part. There lengthy question lengthy है, इसलिए कोई डाउट नहीं इसमें, बट इसको आसान नहीं होता. बाद में क्वेश्चन शुरू करेंगे तो फंस जाएंगे इसी में. Now come to the second part. The cost price of article Q is, तो CP Q दिया है, CP दिया है, Q वाले का कितना है? 200. प्रॉफिट दिया है, तो गेट्स प्रॉफिट दिया. प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. यस, तो एसपी निकालना है इसका, तो एसपी माइनस सीपी 200 अपॉन सीपी 200. ओके, फाइन. तो 1 point, so main point here 1.5 and d is how much? 45. Main d we have to find from here is equal to SP upon 200 minus 1. Let's simplify this. 5 2 ja, 5 9 ja, 5 4 ja, 5 3 ja. So 27 upon 40 plus 1 is equal to SP upon 200. So 67 upon 40 SP 5 तो SP comes out to, yes, that is comes out to be 335. lengthy question, but see, we have to first, questions all are important and all are scoring, not a doubt, but we have to understand that they are lengthy questions. So we have to read the question and then leave for the
Next round. Round 1 means simple question. Round 2 means little moderate question. And round 3 means lengthy question, right? Let's do the 38 question because time is there. Yes, 38 question. Yes. Okay. 38. So 38 question is a very good question. Please read the question. The question. Next question है 38. 38. I invested a sum of 20,000 for 2 years and 10 days at the rate of 11% per annum at the compound interest. The amount he received after 2 years again interested for the same time at the same interest rate in a simple interest. The approximate simple interest he received. Yeah, find the approximate simple interest he received. Okay, so he receives after 2 years again invested. So what he is doing, he has some of 20,000 rupees he has. That sum what he do, let's make a table. Okay, so like this, he has some money and then again some money. Fine. This money principal P for how many? For 2 years. And then again next continuing. Rate is 11%. Compound CI, compound interest. Okay. This is simple interest. Fine. So the amount received, the amount will come from here. This amount received will be the principal for the simple interest. Time is 2 year, rate is 11% only. Okay, so that is the link. First 2 years compound interest, 2 years same rate of interest, and that amount जो amount आएगा वहां से 2 साल के बाद वो अगले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में जाएगा और इसका जो इंटरेस्ट निकालना है वो इसका इंटरेस्ट पूछा कितना इसका इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछ रहा है. Clear? Yes. Let's begin. So compound interest means what? Amount is P1 plus R over N T. Fine. Principal is 20,000. Okay. 1 plus R is 11%. Right? N is 1 only because for 1 year only, there no parts are not there like quarterly. So 1 only, so 11 upon 100. And 2. How many for 2 years, right? So that comes out to be, tell me how much? 20,000 into 111 square upon 100. So let's cancel that, all 4 zeros. So 2 times 1, 2, 3, 2, 1. Right? Yeah. Square upon 1 कितना आता है? So 2, 4, 6, 4, 2. Right? This is the amount. Fine. Yeah. Now this amount becomes the principal for the second simple interest. So simple interest, so I is equal to for next 2 years. So P means P next P means A, not A, into R into T upon 100. So P how much? 24642 into R 11% into time 2 upon 100. There's one, sir. Any doubt here? No, sir. So can you calculate this amount? Here we will have point. Okay, no problem. But first we'll multiply.
First, let's multiply by 11 first, or 2. Whatever you say. First 11, okay. So 11 2 ja 22. 22. 11 4 ja 44 plus 2, 46. 11 6 ja 66 plus 4, 70. 11 4 ja 44 plus 7, 51. 11 to the 22 plus 5, 27. Right? 7. Into 2 upon 100. We can put third decimal because required. Now 2 2 ja 4. 2 6 ja 12. Decimal. 2 1 ja 2. 2 7 ja 14. And 2 2 ja 4. 1 5. So 520, 5421.24. Answers matching? 5421? Yeah. 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 So simple Question. question. Did you understand the question? Answer, Yeah, solution? bro. Yeah. So I think these questions are lengthy, but they're good questions, right? Good questions. This mapping, I always try to do this mapping. I think that we should always first understand the question nicely. My approach is that first understand the problem as much nicely as you can, and then answer becomes very easy. Next question. Yes, please read the question. So his time is very time Less. is near about. Okay, so we can wind up now, and we can again meet next class. Okay. So thank you so much for this wonderful interactive class and recording. We will meet again and we'll discuss all these questions. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay.